However, this is AfreenAli. Subscribe my channels and press the bell button as well when you have to make a new video. So you will notifications. You will get a notification for a new video. So this is a firefighting. I will be discuss the criteria and design concept for how we design the firefighting. So don't forget to subscribe and press the bell button as well. So I have to speak in bilateral language. First part is in English and other part will be after that then I will finish the English language. After that it will be in Hindi language as well. So till to last you have to see the video. So maybe I will be clear the all concept for firefighting design system. So what do I think we have to cover in this topic? So first we have to I will tell you this classification of firefighting and classes of firefighting and tree system and loop system of firefighting. So this is so simple here. So we have a classification in three classification of firefighting: light hazards, ordinary hazard, and extra hazards. So you can see here, this is most of building we encounter with us in building services to the ordinary hazards. So light hazard, what is the light hazard? So first I will tell you the ordinary hazards. Ordinary hazard, for example, the sprinklers is covered to the approximate 130 square feet one. So this 3 by 4 like that, 3 meter here and 4 meter here. So most of the building design as per the ordinary hazard. So this is the things here. This is so simple for calculation. 2 will be 2 die will be the 25, and after that will be the 32 is like that, 1 inch and 1 and 4 inch. So this is the criteria. So so ordinary hazard is so simple. This sprinkler will be cover how much the area, 130 square feet or 12 square meter, 12.3 square meter, you say this one. So if you go to the ordinary hazard, sorry, light hazards is a little bit more. For example, here to here is the 4.57 and 4.57 the distance in meter, or it will be covered 225 square feet one sprinklers. So this is a light hazard. So in light hazards there is the some projects, you say this is a gym or mosque or church or hospital will be coming to the light hazards, but this ordinary hazard, offices, buildings, education system and everything will be in the order. And extra hazard we have as well. So extra hazards, sprinkler will be covered approximate how much the area. This is square feet, in square feet, 100 square feet. So it will be more tidy. So this is this one is a hazard system. The classification class of the fire, we have a class A, B, A class, B class, C class, class A, class B, class C, class D, class E, class F. So class A, what is a class A? Class A basically involved in materials, solid materials such as the paper, wood and the textiles. And you come to the class B, this is the flammable liquids, petrol, diesel, oils, like that. And this is class C, it will be the involved with the gases, okay. And class D will be the metals, and class E will be the electricals rooms or electrical operated things like computers rooms or electronics, this one. So class F is involved with the cooking oil such as to the deep fryer or like that. So this is the criteria for I tell you, and this is I will explain to the what is a loop system, what is a tree system. Basically this drawing is designed as per criteria of the tree system. System is same like that. We have calculated a 1 inch. After that this tire will be changed or this tire will be changed. So tree, this is tree. See, this is lighted coming, this is expanded like tree. See, this is going to the tree. See here, this is go here, and this main pipe is white color. This is expanded here. This is like tree, okay. This is same like that. This is here also as well. You see here, this is main line is coming here, and this is coming from here, and tree. And if you are going to the loop system, in previous drawing I already made it for a general ordinary system. So this will be like mostly we are using drawing in loop system. So loop system basically is coming to here, and like that they make the loop, okay. They make the loop, for example here they make the loop, they make the rectangle or circle like that. After that branch will be go like that, okay. It will be not like tree. This is tree system.
So loop system is more efficient as compared to the tree system. So if you have a big project or you have a good, budget, you have to go with the tree. So you have to go with the loop system. So this is a project we have to discuss more on. So now you have to, I think it's clear. This is same like that previous we already discussed the things here. It's so simple. This is covered by this one. So hope you understand this drawings, and we hope understand to the knowledge of the criteria or design concepts. So I have to go in the Hindi language or Urdu language as well. So I will start in Hindi. देखें इंजीनियर्स, इसमें होता ये है कि हमारे पास 3 सिस्टम है बिल्डिंग सिस्टम, आपका फायर फाइटिंग में आप क्लासिफिकेशन 3 में ले लेते हैं हम इसको, लाइट हजार्ड्स, ऑर्डिनरी हजार्ड्स और आपका तीसरा एक्स्ट्रा हजार्ड्स. सो हमारा जो बेसिकली जो हम मोस्टली काम कर रहे होते हैं वो हम ऑर्डिनरी हजार्ड पे कर रहे होते हैं. ऑर्डिनरी हजार्ड मैंने बताया कि 12 स्क्वायर मीटर और 130 स्क्वायर फीट एक स्प्रिंकलर विल भी कवर करता है. ठीक है, ये हो गया आपका. अच्छा, अब इसको ये ऑर्डिनरी हजार्ड हो गया. अगर आप लाइट हजार्ड पे जाते हैं, लाइट हजार्ड क्या होगा, 225 स्क्वायर फीट पे चला जाएगा, यानी कि 4 मीटर 4.57 मीटर 4.57. ये यहाँ पे क्या है 3 मीटर बाय 4 मीटर. ठीक है, तो ये आपका लाइट हजार्ड में आपका 225 स्क्वायर फीट हो जाएगा और 4.57. ठीक है, और ये हो गया इसमें. तो आप क्लियर हो गया इन दोनों बातों में आपको. अच्छा, तीसरा क्या है एक्स्ट्रा हजार्ड. एक्स्ट्रा हजार्ड थोड़ा सा मोर टफ हो जाता है. इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा हजार्ड में हमारे पास 100 स्क्वायर फीट आ जाता है एक स्प्रिंकलर. ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है 100 स्क्वायर फीट. वो मोर टाइट हो जाता है. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई इसकी. अब हम क्लास की बात कर लेते हैं. हमारे पास क्लास इसमें ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, डी क्लास है, ई क्लास है, एफ क्लास है, 5 क्लासेस में. तो हमारे पास ए क्लास में क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, सॉलिड मटेरियल्स हमारे पास होते हैं जिसमें वुड है, पेपर है, टेक्सटाइल्स है. ठीक है, बी क्लास पे हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है एंड ऑयल है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी क्लास है. सी क्लास में गैसेज इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है, उसके पास हमारे पास क्लास डी है तो वो मेटल्स में आ जाता है. ठीक है, क्लास ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रूम्स हैं या कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स वगैरह में आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो क्लास एफ है हमारे पास इन्वॉल्व इन कुकिंग ऑयल सच एज द डीप फ्रायर वगैरह आप कहते हैं आप, उसमें आ जाते हैं. तो फायर फाइटिंग का ये क्राइटेरिया है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 चीज़ है, हम डिज़ाइन करते हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमें ट्री सिस्टम करना है या लूप सिस्टम करना है. हमारे पास 2 सिस्टम. ये देखिए, ये जो यहाँ से चला, यहाँ से ऊपर से आ रहा है. ठीक है, यहाँ से उसका जो है मेन सिस्टम, यहाँ से बिल्ड सिस्टम राइजर है, तो यहाँ से ये गया तो ये ट्री की तरह एक्सपेंड हो रहा है. देखें आप, ये यहाँ से गया, ब्रांचेस गए, यहाँ ट्री की तरह एक्सपेंड हो रहा है. ये यहाँ से गया आगे, यहाँ से इसकी ब्रांचेस गई, ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंड ट्री की तरह एक्सपेंड हो रहा है. तो ये ट्री की तरह एक्सपेंड है. ये ट्री सिस्टम है बेसिकली. ठीक है, हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको हम लूप सिस्टम कहते हैं. अच्छा, वो मोर एफिशिएंट है. सिस्टम वही है, हम उसी तरह इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. इसमें हम इसको जो डाया होता है उसको हम डाया को अच्छी तरह 1 इंच के बाद 2 1 इंच होता है, उसके बाद 1¼ इंच ले लेते हैं या 25-32 ले लेते हैं. तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ये तो ट्री की तरह एक्सपेंड हो रहा है. देखें, एक्सपेंडेड हो गया ट्री की तरह, यहाँ से ये एक्सपेंड हो गया ट्री की तरह. उसमें क्या होता है, ऐसे लूप होता है इसमें. ठीक है, लूप सिस्टम आ जाता है, ऐसे लूप कर देते हैं उसको, राउंड कर देते हैं, घुमा देते हैं उसको. ठीक है, मेन पाइप को हम लूप कर देते हैं. फिर वहाँ से हम ब्रांचेस निकालते हैं, मेन ब्रांचेस, वहाँ से ब्रांचेस निकालते हैं. अच्छा, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें कोशिश करते हैं लूप सिस्टम करें. लूप सिस्टम वेरी एफिशिएंट है, बहुत अच्छा होता है वो. उसमें हमारे पास ड्रेन सिस्टम भी बहुत इजी होता है. देखिए, यहाँ पे बार बार ड्रेन दे रहा है, फ्लैश ड्रेन. उसमें हम एक ही दफ़ा कहीं पर भी हम उसमें लूप में कहीं भी दे देते हैं, वहाँ से ड्रेन हो जाता है. प्रेशर टेस्ट भी इसी कर लेते हैं हम इसको. तो लूप सिस्टम इज़ मोर सफिशिएंट है. तो होप आपको एंजॉय होगा इस वीडियो में. अच्छा, इससे व्हाट्सअप ग्रुप मेरे पास है, अगर कोई ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाए. कुछ लोग ऐड नहीं हो सके हैं तो दोबारा कमेंट कर देते हैं, उनको ऐड कर देता हूँ. अच्छा, मैं वीकली एक दफ़ा आप लोगों को ऐड करूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है. और हमने पहले एक लिंक बनाया था, वो हमने दिया भी था, लेकिन कुछ शरारती लोग आ गए थे तो उसमें उन्होंने काफ़ी अब्यूज़ थिंग्स हमारे ग्रुप में डालना शुरू कर दिया था. तो हमने उसको डिलीट किया और अभी लिंक ख़त्म कर दिया. तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट कर दे तो वीकली मैं आपको ऐड कर लिया करूँगा, 1 a day. ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ. और जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए हैं और जो कमेंट दे चुके हैं और वो दोबारा काइंडली रिमाइंड कर दें मुझे कमेंट्स में, तो मैं उनको ऐड करता रहूँगा.
ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि मैं आपको वहाँ पर टाइम नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं और बहुत टैलेंट वहाँ पे शेयर हो रहा है। तो आप वहाँ पे किसी से भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बटन। और तकरीबन 8,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास हो गए हैं और तकरीबन 1 लाख यानी 100,000 व्यूज़ पर मंथ है। तो चैनल इज़ वेरी ग्रोथिंग फेस में है और बहुत खुशी हो रही है कि सारे इंजीनियर्स हमसे जुड़े हुए हैं और तकरीबन 1 लाख इंजीनियर हमारे चैनल को देख रहे हैं पर मंथ, और 8,000 इंजीनियर हम जुड़ चुके हैं हमसे और मज़ीद ग्रोथिंग हो रही है। अप्रॉक्सीमेट 8,000 के नियर है, अभी 1001 ही है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग टू मी माई चैनल एंड अच्छा, इस तरह भी आप मज़ीद लोगों से भी शेयर करें, मज़ीद लोगों को मेरे चैनल्स के बारे में बताएं। तो इसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। आफरीन अली, बाय बाय।